Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. We'll start in 2 minutes. Okay. The students, so last class, I think we had right? Yes, students. So good. Okay. Last class decimal fraction सिखाया था ना मैंने. Yes, sir. Sir, you had said we have to. Okay. अभी how we had done some sums in class and some were given for homework, right? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Abhi Ashish, there's one student named Ashish. He has some doubts. He has sent it on the group. So first I'll solve those doubts. Okay. And then I'll continue with your doubts. ठीक है. प्रिया निकम क्या डाउट है आपको? Sir, in the decimal fractions exercise, I have some doubts. Yeah, so wait, first let me solve this question number 12. Okay, then one by one I'll take your doubts. Okay, sir. जिनको भी डाउट्स है जस्ट रेज योर हैंड एंड मतलब रखो आप ऐसे तो वन बाय वन आई क्लियर योर डाउट्स. This is question number 12. So see, in the numerator we have 3 and 4, 7 places. Here we have 2 and 1, 3. So हम denominator में 4 times मतलब Yes, sir. से multiply करेंगे. Okay. 12. So 12 we had to do in the class only last time. We did it in the class. ठीक है, किसको तो डाउट है ये क्वेश्चन में तो अभी हम सॉल्व कर लेते हैं. सो इट इज 7 into 5, 7 into 9, 9 into 1, 9 into 4, 4 into 1, 4 into 2. एंड हियर वी हैव 5, 2 यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 10,000 है. करेक्ट. सो वी हैव 15 upon 2 into 10,000. We have done this question in the class. तो ये जिसने भी डाउट भेजा है प्लीज गो थ्रू द रिकॉर्डिंग. ओके. Yes, sir. This becomes 7.5 upon 10,000. Now please check the recording for this question. Okay. Ashish Pitale, is he present today? Yes, sir. सर मैं ध्रुव बोल रहा हूँ. मैंने मेरे पापा के फोन से भेजा था. लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया है क्या? सर किया था पर मैंने थोड़ा जल्दी लीव कर दिया. तो फिर रिकॉर्डिंग एक Last बार चीज चेक की. करो. ये सारे क्वेश्चंस क्लास में हो चुके हैं. Okay, Yes, sir. sir. Give answer 0.00075. Okay. Now Gargi, what is your doubt? Sir, in 1 minute, 1 the minute. So unmute पे यथा, please be on mute. yes, sir. Sir, the 11th 1 question. minute, Gargi, please wait. There's someone who is not on mute और जिसके यहाँ से बहुत आवाज आ रही है. यथार्थ अग्रवाल, please be on mute. Yes, sir. I'm not able to mute myself. हो गया है. तो बैकग्राउंड में आवाज बंद करो या तो प्लीज लीव एंड रीजॉइन.
because it is disturbing the whole class. Okay. Yes, Gargi, which question? Just tell the question number, okay? Sir, 11th, 24, 30, and 32. Question number 11. Which of the following is smallest in the following numbers? इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए. This is very basic. Okay. So first thing, two options are I positive. found out the answer, but it was wrong in the uh, So answers. minus That's why I got confused. 1.5 and minus 1.375. So tell me which one is smaller. Sir, minus 1.375. How this is smaller? When we go in negative, let's say this is the number line. So here we have 0, here we have 1, minus 1, here we have minus 2. Which is greater from these two numbers? Minus 1. -1. हाँ, तो फिर यहाँ पर कौन सा ग्रेटर है? Minus 1.5. Okay. Minus 1.375. 1.5 कैसे? This one is greater. 1.375. So this one is 1.375. smallest. Yeah, minus 1.5 will be small. Yes. Okay, what is your next doubt? So question number 24. स्टूडेंट जिनके कॉमन डाउट है अभी ध्यान दो. अगेन वी आर नॉट गोइंग टू डू दीस सम्स, ओके? पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करो. सो डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे तो 5.5 माइनस 3.2 कितना होता है? 2.3, करेक्ट? 13.7 प्लस 2.3 कितना होता है? 15.9. Sorry, 16. 16 हो जाएगा. सो यू हैव 60. So you have 65.5 into A upon 16 is equal to 65.5. So A has to be 16 so that A and A cancel. 16, Okay? sir. इतना ही बचेगा. So answer is A is equal to 16. Understood करके? Yes, sir. Sir, 30th one. 30. Yes, sir. What decimal of an hour is a second? So in 1 hour there are how many seconds? 60 into 600. So you have to find out 1 upon 3000. 3600. So अभी आप क्या कर सकते हो? You divide 1 by 36 first. So you put 0, minus 0, 1 आ जाएगा. You put a decimal point, you take 0, minus 0 करोगे आप again. You get 1 0. यहाँ पर एक 0 आ गया. अभी next इस पे आप 0 लोगे. अभी 36 goes in this how many times? 2 times. तो minus 72. You're left with 28. Then again you put a 0. So 36 will go how many times? 36 into 7. 18, 1 carry over 228. करेक्ट? इसके बाद और Yes, sir. 36 ऐड किया तो क्या होएगा? 14, 1 carry 264. 264. तो यहाँ पर आ गया 0.0.
Okay, so minus 264. Whatever remains, you can leave it. So now 1 upon 36 is equal to 0.028. Correct? Yes. Now, after this, you have to divide this by 100. तो आंसर होएगा 0.00028. ये ऑप्शंस में दिया नहीं है ना? I guess it should be 27. Have I made a mistake over here then? Let me check. Just 1 minute. Just let me check. But Should be 7. एक second. Sir, I think in the multiplication you did 7 and Oh, you wrote okay. यहाँ पर 28. I had to add 4, but I added only 1. Got it. Yes, Got it. ma'am. Sorry. Again, I'll do it. Because sir, 36 into 8 is 288. Which Yeah, is I greater got than it. I 288. made a mistake in multiplication. So here you get 280 and then 36 into 7. I just added 1 instead of 4. So here you get 2. 4 carry over. 252 होता है. So यहाँ पर 7 आएगा and this will become 7. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, next doubt. 32. See, these are very basic some questions, okay, which you are asking. ये आपको आना चाहिए खुद से. What decimal of a dozen are 3 articles? So 1 dozen is equal to how many articles? 12. So it is 3 upon 12, which is 1 by 4. So 1 by 4 कितना होता है? 0.25. 0.25. हाँ, so ये डाउट नहीं आना चाहिए स्टूडेंट्स. दिस इज वेरी बेसिक. ये 5th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है. ठीक है, स्नेजा बापट, क्या डाउट है आपको? 26th question. Only one doubt? No, sir. And 15 and others are from other chapter. That Other 20 to chapter 30 मतलब sums कौन से were चैप्टर का है? homework. 20 to 30 sums were homework. Na? From fractions. Yes, sir. 0.1 into 0.1 कितना होता है? 0.01, करेक्ट? Yes, sir. माइनस इसका वैल्यू कितना आएगा? 0.001. 3 0 आएंगे फिर 1 आएगा. अभी ये आप सॉल्व करो एंड इसका आंसर निकालो, ठीक है? Okay, sir. Sir, देखो, but how come 3 zeros? Doubt solve. 1 upon 100 multiplied by 1 upon 100 gives you 1 upon 10,000. 4 प्लेसेस पीछे जाना है तो 3 zeros आएंगे ना. Okay. और यहाँ पर ही कॉमन दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड. हियर वी हैव 2 places, here we have 2 places, so in the product we should get 4 places after the decimal point. Okay. So you solve this sum on your own, okay? Now Okay. next question. 15. 15 was done in class, I think. No, sir. And 15, okay, even if it's not done, there should be, इसमें doubt नहीं होना चाहिए students. ये बहुत Sir, ज्यादा. my एक- answer was 0.041, but it अभी is पहले given wrong. 37 upon 1000 कितना होता है बताओ मुझे? 0.037. प्लस 0.004, बराबर? Here I had written 0.041 only, but it is given wrong here. What they have given in the book? 41. Oh, okay, there must be some अच्छा, ठीक है. It's in printing error then, that's why. But your answer is correct. Okay, sir.
And from fraction chapter 28 and नहीं नहीं 24. फ्रैक्शंस का बाद में पूछो, पहले हम डेसिमल्स करते हैं. विवेक, व्हाट इज योर डाउट? Sir, 0.041 is given as option A. No, no, Yes, sir. she's Yes, saying, sir. It's given, sir. Yes, sir. listen, she is saying that behind the answer is given as 41. Acha. Sir, behind the No, answer is sir. also. Answer is that only. 0.041 Yes, sir. Yes, sir. Same. 0.041 only. Yes, sir, I checked. It is. So Sneha, please check. Okay. Okay, sir, it might be a printing mistake in my book. Okay, Vivek, what is your doubt? Sir, question number 13. 50.8 divided by 2540. ये है क्वेश्चन 13. अभी लॉजिकली अगर आप देखोगे, पहला और दूसरा ऑप्शन तो नहीं आ सकता. यस और नो विवेक? Yes. It is 50.8 upon 2540. अभी आपको डेसिमल हटाना है तो आप लिख दो 508 upon 254 into 100. Yes or no? Yes. 1 into 2. So it is 2 upon 100, which is 0.02. Sir, I just wanted to ask why did we multiply it by 100? 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, 50.8 है और यहाँ पर है 2540. ये डेसिमल निकालने के लिए हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई किया. ओके, सो वी गेट 508 अपॉन 25400. फॉर these two zeros I have written 100. Sir, I also have doubts in 7th question. सी स्टूडेंट्स, पहले एक क्वेश्चन कर लो, उसके बाद हम डाउट सॉल्व करेंगे. ओके, पहले ये हो गया क्या क्वेश्चन सभी का? विवेक, आपका नेक्स्ट डाउट क्या है? Sir, question number 7. स्टूडेंट्स प्लीज बी ऑन म्यूट. देखो, सेकंड वाला पार्ट डिवीजन है, करेक्ट? Yes. a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई डी है, तो ये हम बाद में करेंगे तो भी चलेगा. पहले आप a प्लस बी कर लो, चलेगा? तो a प्लस Sir, बी but it is BODMAS. बॉडमास है, तो आप इसको डिवाइड भी कर लोगे तो ये तो एडिशन ही होगा ना. इसका क्या होगा आंसर? लेट्स से c डिवाइडेड बाई d इज इक्वल टू x. ओके, सो व्हाट यू विल गेट? a प्लस बी माइनस एक्स. सो विल द वैल्यू चेंज? a प्लस बी तो सेम रहेगा, x बाद में भी निकाल सकते हैं हम. यस और नो? Yes, sir. तो पहले ये ऐड कर लो, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर आपका? 3. 3. यहाँ पर आएगा 9. 9, 10, 1 कैरी ओवर, अगेन 10, 1 कैरी ओवर, 6009.3. So you have Yes. 6009.3 minus c divided by d is equal to 59993. करेक्ट? Correct. ये एक पूरा यूनिट आप इसको x लिखो, ठीक है? So can we write this as 6009.3 minus x is equal to 5999.3. Is it correct? Yes. Now we'll Yeah. take this minus x on the other side as plus, and we'll get this 5999.3 on the other side as minus. So you get 6009.3 minus 5999.3. ये सब्ट्रैक्ट करके आंसर क्या आएगा? 0. 10. 0. 0 तो नहीं आएगा, ये 5999 है, ये 6009 है. क्या आंसर आएगा बोलो विवेक? 10. 10. वेरी गुड. सो दैट मीन्स 10 इज इक्वल टू x. समझ में आया? Yes. अभी x Yes. का वैल्यू क्या है? x के जगह है हमारे पास 10 इज इक्वल टू 54.63 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क. अभी किससे डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू 10 आएगा बोलो?
What number multiplied by 10 gives you 54.63? It has to be 5.463. Yes. Understood? Sir, I didn't understand that why we consider it x. Just to make our calculations easier. Otherwise, you take both of them on the other side. वो आपको समझने में डिफिकल्टी होगा कि -54.63 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क दूसरे साइड पे कैसे गया. x क्यों कंसिडर किया है कि इसको डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगा वो x का वैल्यू हो जाएगा. फिर हमने फिर से x को सब्स्टिट्यूट किया ना यहाँ पर. Yes. It's just substitution, nothing else. We didn't change the question or we didn't change any method. बेसिक बॉडमास ही किया है. जस्ट दैट कैलकुलेशन इजी करने के लिए और इजी दिखने के लिए इसको हमने एक वेरिएबल कंसिडर किया कि c डिवाइडेड बाय d जो भी वैल्यू आएगा. अभी मुझे बताओ 6009 माइनस दिस वैल्यू हैज टू बी 599.3. 599.3 करेक्ट. तो यहाँ पर मैं x लिखूं या y लिखूं या c डिवाइडेड बाय d लिखूं, मेथड तो एक ही रहेगा ना कि दिस माइनस दिस हैज टू गिव यू दिस आंसर. Yes, sir. इसीलिए. Okay. स्नेजा, आपको और भी कुछ डाउट है क्या? Sir, in fractions chapter. I told you please lower your hand. Afterwards we'll solve fractions. Now we are doing this part, decimals. Vivek, all your doubts are cleared. So Krithvi, what is your doubt? Sir, the 33rd sum. पहले अभी ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो. 6.4 इंटू 2.5 कितना होता है? 16. So 16 plus this value gives you 26. Correct? Yes, sir. So that means इसका वैल्यू कितना आना चाहिए? Sir, it should be equal to 26 minus 16. हाँ, कितना होता है? 10. कितना होता है? 10. ओके, ये समझ में आया. देखो 4.41 is being divided by 2.1 is being divided by question mark. तो बेसिकली 4.41 को हम ये दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड कर रहे हैं. 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करेंगे, अगर आप वो फॉलो करोगे कि 4 को पहले 2 से डिवाइड कर लिया तो गलत हो जाएगा. तो हम क्या करते, 8/4 इंटू 2, या फिर 8 को पहले 4 से डिवाइड करो आएगा 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1. तो सेम वे यहाँ पर हमने वो अप्लाई किया है. समझ में आया? Yes, sir. हाँ. ओके, नाउ टेक दिस क्वेश्चन मार्क ऑन द अदर साइड. So you get 4.41 upon 2.1 is equal to 10 into question mark. इसका वैल्यू कितना आता है? 2.1 into 2.1. So आपको आएगा 2.1 is equal to 10 into question mark. Therefore, question mark is equal to 0.21. Okay, sir. Understood. As everyone finished, सबके डाउट्स हो गए सॉल्व करके अभी? आरव, क्या डाउट है? Sir, can you solve question number 30? 30th क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है. ओके. Oh, okay. So 1 second, sir. I'll just take a screenshot. यस. फ्रैक्शंस नेजा, आपको जो डाउट है, एंड आरव आपको भी फ्रैक्शंस में डाउट है? No, sir. Yes, sir. Yes, No, sir. the other Arav. Yes, Yeah, sir. at the end of the class, please wait. We'll solve your doubts. Okay. Okay, sir. Okay. Now we'll solve some past question paper questions. I don't think a worksheet share किया है ना मैंने 7th standard का for these 2 chapters. No, sir. हाँ ठीक है. No, आज sir. No, sir. listen now.
I understood. I haven't shared. After the class, I am going to share it with you all. For now, I'll write the questions or whatever the question I have to ask on the board. Okay. Is it clear? Yes, sir. फ्रैक्शन एंड डेसिमल दोनों का ये कंबाइंड वर्कशीट है. ओके. Question number 1. The sum of 3 fractions is given. Okay, so let the 3 fractions be x, y and z. Okay, I'm writing the question is short because अगर पूरा question board पे लिखूंगा so time waste होगा. So there are 3 fractions जिनका sum है 59/24. Is this part clear? When the largest fraction is divided by the smallest fraction, so what we'll consider is x is greater than y, which is greater than z. So this is the smallest, okay, and this one is the greatest. समझ में आ रहा है students? And these x, y and z I have considered. Okay, it is not given in the question. Now I'll first fully read the question. The sum of 3 fractions is 59/24. When the largest fraction is divided by the smallest fraction, the answer is 7/6, which is 1/3 more than the middle one. Find the fractions. Okay, ये है question. अभी आपको क्या दिया है? x divided by z is equal to 7/6, which is 1/3 more than the middle one. 7/6 और y का रिलेशन क्या है बताओ मुझे. This is 1/3 more. 1/3 more than y. 1/3 मोर मतलब मल्टीप्लाई करेंगे y को या ऐड करेंगे y में? ऐड कर. Add. Very good. Has everyone understood this? So now 7/6 minus 1/3 is equal to y. So y का वैल्यू कितना आएगा? 3/2. 5/6. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now see, here they have also given us the options. Yes, Divija, क्या doubt है बोलो? Sir, I'm not understanding this question. Which part? The whole question only you didn't understand? Yes, sir. मैंने क्या क्या बताया क्वेश्चन में या बोर्ड पे क्या लिखा है वो पहले पढ़ के मुझे बताओ क्या लिखा है मैंने और क्या समझाया मैंने. So sir, x plus, so the question is, the sum of 3 fractions, which is x, y and z, when you add them all, 59/24 is the answer. Now when the smallest fraction, which is x, which you have written, is divided by z, is equal to 7/6. हाँ, फिर इसका मतलब क्या हुआ? और आगे मैंने कुछ बोला था उसका मतलब क्या है? Okay. So, sir, Till you have understood this part, yes, sir. and this much. X divided by Yes, z. X is greatest, z is smallest. You get 7/6. 7/6 is 1/3 time 1/3 more than the middle one. तो middle fraction कौन सा है? Y. y. So y plus 1/3. अभी y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? बेसिक इक्वेशंस आता है आपको? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, अभी You take it to the other. अभी एक मिनट, जिसको डाउट है दिविजा, 7/6 minus 1/3 कैसे करोगे बताओ? So you'll take 3 and you'll multiply it with 7 3s as 21 and 1 6 Why you as want to waste 6. so much time? You have not learned basic fractions. दोनों का LCM क्या है? 6. So 6 will go in 6 one time, so 7 into 1 7 minus 3 will go in this 2 times 2 over here, so you'll get 5/6. So you've got the middle 5/6. fraction. Okay, Understood? sir. Okay. Yes. Now see students, the 4 options are given. In the 2 options you cannot see 5/6, मतलब वो तो आंसर नहीं है आपका. This one and this one is cancelled out. Yes or no? Sir, can you repeat the question number? I'm not finding it.
Students, you don't have these questions. Just pay attention on the board and don't disturb me in between, okay? By asking such questions. ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा भी है मैंने क्वेश्चन नंबर. This is from the worksheet, okay? Now please no more disturbance. So students, have you understood that one fraction is 5 by 6? So we don't have 5 by 6 over here. We don't have 5 by 6 over here. So these two options are cancelled out. Yes or no? Yes, sir. Others, please Yes, sir. answer. Only one or two students are answering. There are more. How many? 30 Yes, sir. students are there. And sir, we can then check with 7 upon 8 and 3 upon अभी 4. रुक जाओ. Now what they have said, x divided by Sir, the answer is 7 second by one. 8 divided by 3 by 4 करेंगे. So when we divide these two, what we get? 7 by 8 multiplied by 4 by 3. So 4 into 1, 4 into 2. So we get the answer as 7 by 6, which they have given us. So the answer is option number 2. Sir, can you tell the 7 by 8 divided by 3 upon 4 part once again? आरव, आपने फ्रैक्शन नहीं सीखा है क्या? No, sir. I was like, where was 3 upon 4? Oh, acha, Option पे understood. दिया है ना? Acha, from the option. Okay, sir. Got it? Sir, I have a doubt. हाँ. सर अगर मतलब ऑप्शंस में दो ऑप्शंस में 5/6 होते हैं तो हम लोग दोनों को चेक करते. Yes. ओके सर. That's the easiest way, because after getting 5 by 6 over here and without options, it will be very difficult to solve. Then you'll find out x plus y कितना होता है, x divided by y कितना है. ये सब relation से find out करना is very difficult. So it's better that you use the options. Everyone finished writing, or if you have not finished, please take a screenshot. I need to move to question number 2. Done, students? Yes, sir. Four fractions are given. What is the difference between the largest and the smallest one? Okay. So largest minus smallest करना है. अभी देखो, यहाँ पर सारे fractions greater than half है. So you cannot use that condition. अभी आपको decimal fractions आता है, right? So 3 by 4 का value होता है 0.75. Okay. 4 by 5 का value होता है 0.80. 2 by 3 का value होता है 0.66. And 5 by 6 का value कितना होता है बताओ? 0.83. ओके. 883. अगर ये आपको नहीं पता है कैसे, देखो ये सारे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली. 2 by 3 आपको पता है, 3 by 4 पता है, 4 by 5 भी पता है. 5 by 6 अगर नहीं पता है तो आप डिवाइड करके चेक करो. तो यहाँ आएगा 0. फिर आप हो जाएगा ये 50. 6 into 8, so minus 48. You are left with 2. On this point, you again take a 0, so you get 3 times. Okay. We are only finding till 2 digits. So which one is the greatest? 5 by 6. Which one is the smallest? 2 by 3. So 5 by 6 minus 2 by 3 is equal to 1 by 6. Understood, everyone? Yeah, this was in the exercise of fractions, the 21st question. Okay. Very good. सर बोलो. सर हम लोग ने जब इसे फ्रैक्शन डेसिमल्स में कन्वर्ट किया तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे क्या, डेसिमल्स को माइनस करके उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना. अभी देखो 0.83 minus 0.66 कितना आता है आंसर? 0.17, राइट? यस सर. अभी आपको क्या Yes, होगा, sir. अभी हर एक ऑप्शन को आपको कंपेयर करके देखना पड़ेगा 0.17 किस में आता है. यस सर. सो इट्स बेटर दैट ऑप्शंस आपको फ्रैक्शन में दिए है ना आंसर्स के, तो फिर आप ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करके सबट्रैक्ट कर लो. समझ में आया? ओके सर. Yes, sir. ओके सर. Question number 3 we have already done. Okay, it is from the decimal fraction textbook exercise.
So you try this question as homework, okay? Okay, students? ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने आज ही किया है, so you'll get an idea which question I'm talking about. Fourth question, which of the following set of fraction is in the ascending order of their values? So I'll write the 4 options. Then we'll compare. 3 by 5, 7 by 9, 6 by 7. 3 by 5, 6 by 7, 7 by 9. Third one, 7 by 9, 6 by 7, 3 by 5. And fourth one, 7 by 9. Sorry, first is 6 by 7. 7 by 9, 3 by 5. Okay. अभी हमें find out करना ascending order. So first, if you want, you compare these fractions over here only. So 3 by 5 and 7 by 9 में 9 into 3 is 27. 5 into this is 35. So this one is greater than 3 by 5. Yes or no? अभी 7 by 9 and 6 by 7. 7 into 7, 49. 9 into 6, 54. So which is greater? 6 by 7. So what is our answer? Option 1. Understood everyone? Yes, sir. किसको डाउट है ये Yes, क्वेश्चन sir. में? नो डाउट. सर मतलब कि सर वो जो आपने फर्स्ट वाले में निकाला 35, फिर आपने जो 7/9 और 6/7 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हाँ. उसमें 35 का कोई काम नहीं था ना? 35 is with 27, 49 is with 54. ओके सर. Understood everyone? Sir, can you please explain again? I did not understand. Who didn't understand? Sir, me, नाम क्या है आपका? Som Datta. आपने पहला क्लास अटेंड किया था फ्रैक्शंस का? सर नहीं सर, दूसरे क्लास से चालू किया. तो फिर रिकॉर्डिंग क्यों नहीं चेक किया? If we are comparing these two fractions, okay? So first we'll cross multiply. So A into D and B into C. Now if AD is bigger than BC, so A fraction A by B is greater than this. If AD is smaller than B and C, so then you have A upon B smaller than C upon D. Okay, this is what we have used. तो यहाँ पर 3 into 9 27 होता है, 5 into 7 35 होता है, तो 35 is greater, so 7 by 9 is greater. Then 7 by 9 और 6 by 7 किया तो 7 into 7 49, 9 into 6 54, so 54 is greater, so 6 by 7 is greater. Understood? Yes, sir. Thank you, sir. Priya, what is your doubt? Sorry, I mistakenly raised my hand. समझ में आया स्टूडेंट यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Rejoin the meeting. We'll continue now.